Hello friends, I, CA Anshul Agrawal, welcome you all in the virtual study room of CA Foundation, paper number 1, Principle and Practices of Accounting. At an outset, I would like to first welcome you all for selecting this course CA as your career option. I'm sure that after you would have passed your 10th, your 12th, you would have thoroughly evaluated various career options. अब बहुत लोगों से मिले होंगे, बात की होगी, सबसे पूछा होगा कि क्या करना चाहिए, किस कोर्स को कैसे किया जाता है, किस कॉलेज से किया जाता है, उसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है, कैसे है, सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी है या नहीं, और ये सारी चीजें आपने इवैल्यूएट की होगी और उसके बाद आपने ये कोर्स सेलेक्ट किया होगा. तो मैं सबसे पहले आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि यस, आपने एक ऐसा करियर ऑप्शन सेलेक्ट किया है जिसमें 100% एम्प्लॉयमेंट है और आई कैन से देयर इज 0% अनएम्प्लॉयमेंट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स. आई एम योर होस्ट and your dost over here to take up you to this thrilling journey of principles and practices of accounting. My dear friends, I personally believe that you are on a war spree when you are doing a course which is regarded as one of the toughest course, but actually it's not so. Then you are on a war spree, and whenever you are there out for a war, I think you need to first plan and prepare strategy for it. And that planning and that strategy has to be done for this course also, because it is not an exception. So my dear friends, today in the day 1 lecture, what we are going to do is, we are going to understand everything about this course. What this course is about. What this subject is about. And then we are going to start with one by one topics. So my dear friends, big achievements are always made with a small beginning. Yes, it's absolutely correct. That yes, big achievements are made with a small beginning. And yes guys, you guys have done that small beginning today by selecting this CA as your career option. Now, in this slide, I would like to show you an analysis done by us. That analysis, what we did was just to figure out that worldwide, what is the demand and what is the supply of chartered accountants. Now, why you may have heard so many people saying that CA is one of the best course. Why is it so? But you may all know the concept of demand and supply, that if demand of something increases and supply decreases, prices of that product increases. Same thing happens over here as well. My dear friends, let's see this research. You can see the formula where we are finding out total number of chartered accountants divided by population multiplied by 10,000. So we are trying to find out that in which country there are how many chartered accountants out of 10,000 of population. So when we start this research worldwide and we do this research in USA, we find that there are only 15 chartered accountants out of 10,000 population in USA. In USA, chartered accountants are known as CPAs or Certified Public Accountant. So can you believe out of 10,000 population, there are only 15 people who are chartered accountants in USA. If you see in UK, the number is 21. That means there are only 21 chartered accountants out of the population of 10,000. The corresponding number in Australia is 18. The number in New Zealand, yes, it's far ahead from all these 3 countries, but yes, still it's only 68 out of 10,000 population. Now we come back to India and we try to find out this particular number in India. Total number of chartered accountants in India divided by population multiplied by 10,000. और जब आप ये calculations करते हैं तो आपको number मिलता है
only and only 2. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंडिया में 10,000 लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है? 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है. Here I can see massive potential, massive opportunities for chartered accountants. You may question that, sir, how can you compare the statistics of India with those developed nations where India is still a developing nation? I agree to your question. I consider your question. But my dear friends, this number could have gone to 3, 4, 5 and so on. And how this number will increase? This number will increase if the numerator increases. What was there in numerator? Total number of chartered accountants. Denominator, you don't need to worry about it, as any which way is increasing. That is the total population. In numerator, I am already there. All the chartered accountants are there. अब ये न्यूमरेटर में कौन आ सकता है? आप आ सकते हो. You guys can come in this numerator. You who are the future chartered accountants can come in this numerator. पहला दिन है, पहला लेक्चर है. पहले ही जो भी बेसिक क्वेश्चंस होंगे उसको आज ही हम आंसर कर लेंगे, ताकि एक बार जब हम टॉपिक स्टार्ट करें तो हम सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स पे फोकस कर सके. So a lot of time I've seen students coming and asking me, sir, ये कोर्स होता कहां से? Is there any college that conducts this course? Is there any university? कहां पे ये कोर्स किया जाता है? My dear friends, CA, this course is directly conducted by Government of India. Yes, Government of India has a ministry known as Ministry of Corporate Affairs, MCA. That ministry has passed a law on 1st July 1949 और उस लॉ का नाम था The Chartered Accountants Act 1949, and under that act an institute was formed, and the name of the institute is the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI. The Institute of Chartered Accountants of India is the sole body in India to regulate and govern the course of chartered accountancy. There is no college or no university authorized to conduct the course of chartered accountancy, because ICAI is the sole accounting body in India. Now, how this ICAI operates? For operational purpose, you can see the institute has divided entire countries into 5 regions: Eastern region, Western region, Northern region, Southern region, and the Central region. The states of Maharashtra, Gujarat and Goa are falling in the Western region, so their council is WIRC, which stands for Western Indian Regional Council, whose headquarters are located in Mumbai. But sir, do we need to go to Mumbai for every petty things, or a CIRC student may ask that, sir, do we need to go to Kanpur office headquarters? No, it's not. The institute is operating by opening their offices in all the major towns of this country. So, and any which ways, it's a distant learning course. We are in the era of information technology, so things can be done sitting home, just online. So most of the things are taken care by institute by just visiting the institute website, that is www.icai.org. Now, what are the entry routes of this course? Now, when you have to do this course, what are the entry routes of this course? I'll again urge everyone that please understand all these things properly. Because now, when you will do this course, people will come to you for advice and they will come and ask you, यार ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, इसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है. और फिर आप इमेजिन करो, अगर आप उनको आंसर देते हो, यार मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, it will not look so good.
you should have complete knowledge with you. So what are the entry routes of this course? So the first route is the foundation route and the second route is the direct entry route. Now I'll not go into the details of what is the direct entry route, but मैं आपको briefly बता देता हूं. If any person decides to do this course after graduation, any stream, whether it's graduated from science, commerce, arts, doesn't matter, but after graduation, and if he has his average score is 55% in graduation, if he's commerce graduate, or average score is 60% for a non-commerce graduate, then the institute has drawn up a separate way for that person to enter into that course. That route is known as direct entry route. Now under this route, that applicant, that person do not need to give the basic, the first stage examination, that is CA final examination, and he can directly enter this course from the second level. So this route is known as the direct entry route. But now for we students, we are going to understand thoroughly about the first route, that is the foundation route. Who can start their course, their journey in this course through foundation route? So let's have a walkthrough. We'll understand with the help of this walkthrough कि आप ये कोर्स कब चालू कर सकते हैं और आपका ये कोर्स कब खत्म होगा. बड़े लोग कह गए हैं कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत रखो, पर हमारी ये जो जनरेशन Y है, जनरेशन Z है, ये जनरेशन का कुछ और मानना है. ये कहते हैं पहले फल के बारे में पता करो और फिर डिसाइड करो कि कर्म करना है या नहीं करना है. तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए है ये वॉक थ्रू. All you need to do is you need to just keep it in mind where you are, what is your starting point. So you can see over here in this walkthrough, a student is eligible to register with ICAI after appearing 12th standard. Listen carefully. It's not after passing 12th. It is after appearing 12th. So once you appear for your 12th exams, you are eligible to go to the Institute of Chartered Accountants of India and register for the first stage examination, that is CA Foundation. Now you'll ask, so what do you mean by this registration? Registration means taking admissions or enrollment with ICAI, and you then become the student of ICAI. The foundation exam is conducted twice a year, that is in the month of May and in the month of November. So if you have given your 12th exam, appeared for 12th exam in February, March of that year, you will be eligible to appear for foundation exam earliest in November of that year. So आपने फरवरी मार्च में 12th की एग्जाम दी है और आपको नवंबर की एग्जाम अगर देना है तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन की कट ऑफ डेट क्या है? 30th June. Yes, my dear friends, you'll have to go on the institute website www.icai.org. You have to scroll down at the bottom of the website. वहां पे आपको दिखेगा अंडर द स्टूडेंट्स टैब ई सर्विसेज, और आपको वहां जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है फॉर सीए फाउंडेशन कोर्स. द फाउंडेशन कोर्स रजिस्ट्रेशन फीस इज अप्रोक्सीमेटली 9,000 to 9,200 rupees. You have to upload documents, you have to complete registrations, you have to take out printout of the acknowledgement, you have to submit that acknowledgement to the nearest ICAI branch, and then your registration is over. All those students who want to give exam in the month of May, for them the cutoff date is 31st of December. So you need to keep these dates in your mind. So registration can be done after appearing 12th examination. You have to pass your 12th examination. Once you pass your 12th examination, you have to submit your 12th mark sheet again to ICAI to prove that yes, you have passed your 12th exam. After you pass your 12th exam, then you are eligible to appear for CA Foundation examination
in November of that year. Now November eligible है, कंपल्शन नहीं है. अगर आपको लगता है यू नीड टू गिव मोर टाइम फॉर प्रिपरेशन तो आप नवंबर की जगह मई में भी एग्जाम दे सकते हो. एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. After you appear for foundation exam, you have to pass foundation exam and then you have to register with ICAI for the next level known as CA intermediate level. This is the second stage examination conducted by ICAI for which you need to do registration. After you do registration, you get your books, you can start preparing for this examination. So all those students who give exam in November of the year in which they have passed 12th exam, they will be eligible to appear for intermediate exam in the next year November. Are you understanding? So let's take an illustration where a student has given 12th standard exam in February, March 2018. The results have been announced by the respective boards in the month of May, June 2018. Which is the earliest eligible attempt of CA Foundation for such student? It will be November 2018. वो सबसे पहले CA Foundation की एग्जाम कब दे सकता है? November 2018 में. अब November 18 में एग्जाम दे दिया, उसका रिजल्ट आ जाएगा tentatively in January 2019. If he pass in January 2019, he have to again go back to the institute and register for intermediate course. अब आप पूछेंगे सर इंटर की एग्जाम कब आएगी? तो ये स्टूडेंट जो Feb 18 में 12th की एग्जाम दे रहा था, जो November 18 में फाउंडेशन की एग्जाम देके पास हो चुका है, वो स्टूडेंट को अब अपियर होना है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन November 2019. So November 19 में वो appear होगा for intermediate exam and then he'll have to await for result. Tentatively it takes approximately 45 days for inter results to be announced. Now the Institute of Chartered Accountants of India says that in these 45 days you have to undergo one course and that course is known as ICITSS. That means Integrated Certification in Information Technology and Soft Skills. It is a course which is designed by the institute to develop, enhance and crystallize a CA student's soft skills and communication skills. Because वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है. Having knowledge is not enough. You must be able to present that knowledge. That's very, very important. So these 4 weeks will be used to work upon the students' soft skills and communication skills and then your result will be announced. So November 19 आपने अगर एग्जाम दी है इंटरमीडिएट की तो उसका रिजल्ट आएगा लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2020 में. और ये रिजल्ट आने के बाद आपको अब फिर से इंस्टीट्यूट के पास आना है और रजिस्टर करना है 2 चीजों के लिए. What are those 2 things for which you need to register with ICAI? One is CA final examination. And number 2 is your articles training. My dear friends, this part is the best part of this course. According to me, if you ask me, ये वो पार्ट है जो इस कोर्स को बाकी सभी कोर्सेज से इतना अलग बनाता है, आर्टिकल्स ट्रेनिंग. आप इमेजिन कीजिए, approximately in 18 years of age, a student passed 12th standard and in just next 1.5 years, a student is starting with articles training. What is his age? 19 years. Maybe just stepped in 20th year. My dear friends, at such a less age, that student has to work as a trainee in the real life scenario under a practicing chartered accountant for the period of 3 years. Yes, my dear friends, your studies, your hunger for knowledge, your education is not just restricted within the 4 walls. It's not confined within the boundaries. Now, this world is your teacher. When you will go and attend the office,
At the age of 20, I've seen students nowadays, students are completely ignoring formals. They are so much into the western wear, casual wear, that they are not able to carry themselves properly in the formals because कभी जरूरत ही फील नहीं हुई. बट अब क्या होगा? जब आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे, you'll have to be dressed formally, you'll have to understand how to carry yourself in that attire. You'll have to be punctual. आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, बॉस से बात करना पड़ेगा, क्लाइंट से डील करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, अकाउंटेंट्स, टैक्स अथॉरिटीज एंड सो मेनी पीपल अराउंड यू. दिस मेक्स यू अ ट्रू प्रोडक्ट. दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स. नॉलेज तो आपको मिल ही रहा है बॉस, पर ये जो चीज आपको सिखाई जा रही है ना इस कोर्स में, ये किसी और कोर्स में नहीं होता है. सबसे बेस्ट चीज है. सो आपने इंटरमीडिएट में जो भी थ्योरेटिकली सीखा है वो सब प्रैक्टिकली अप्लाई करने का, उसको देखने का मौका मिलेगा आपको ये 3 इयर्स की आर्टिकल्स ट्रेनिंग में. तो हम फिर से हमारी टाइमलाइन कंटिन्यू करते हैं. A student who have given intermediate exam in November 2019 will pass in January 2020. I assume the student is beginning with articleship from 1st February 2020. Now, if he is beginning his articleship from 1st February 2020 plus 3 years, so his articleship is supposed to get over on 31st January 2023. Now, recently, on 12th June 2018, the institute has added a new provision over here, a new requirement over here known as assessments. Now, what is that assessments? तो आप अब इंटर पास हो गए, तो आप 2 चीजें पैरेलली कर रहे हैं. एक, आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं, दूसरी आप सीए फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं. अब स्टूडेंट पूछता है कि सर व्हाट इज द ऑफिस टाइम? सो यू विल हैव टू गो एंड अटेंड द ऑफिस फ्रॉम 10 AM to 6 PM. यस. तो सर फिर हम पढ़ाई कब करेंगे? बहुत सिंपल आंसर है, 10 से पहले और 6 के बाद. सर फिर when we will enjoy our life. ये 5 साल अगर आपने एंजॉयमेंट के बारे में नहीं सोचा तो आगे के 50 साल आप एंजॉय करेंगे. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. समझ में आ रहा है? सो माय डियर फ्रेंड्स, आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं, आप सीए फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं. इस स्टेज में आपका बीकॉम भी चल रहा होगा, पैरेलली ग्रेजुएशन भी चल रहा होगा. और अब यहां पे इंस्टीट्यूट ने एक नई रिक्वायरमेंट ऐड की है कि फर्स्ट ईयर आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद हर स्टूडेंट को एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, विच इज नोन एज एन असेसमेंट. 75 क्वेश्चंस का ऑनलाइन असेसमेंट होगा. Similarly, after completing 2nd year of articles training also, a student has to again come and give an online assessment test for 100 questions. The student will be awarded grades for those tests. And those grades will appear on your CA final mark sheet. This is a very recent amendment effective from 12th June 2018. So first year के बाद assessment, second year के बाद assessment, third year you will complete your articleship. So in our case, the student is completing articleship on 31st January 2023. Now, as per ICI guidelines, a student is eligible to appear for CA final exam in the last 6 months of completion of articles training. So अब यहां articleship complete कब हो रही है? 31st Jan 2023. तो उससे 6 महीने पहले जो अटेम्प्ट आएगा सीए फाइनल का, वो अटेम्प्ट आप दे सकते हो, और वो अटेम्प्ट होगा नवंबर 2022. सो स्टूडेंट हैज टू अपीयर फॉर फाइनल एग्जाम, स्टूडेंट हैज टू पास फाइनल एग्जाम. नवंबर 2022 सीए फाइनल का रिजल्ट आएगा जनवरी 2023. और फिर से वो स्टूडेंट को एक और कोर्स कंडक्ट करना है जिसका नाम है AICITSS, Advanced Integrated Certification Course in Information Technology and Soft Skills, and then he will qualify as a Chartered Accountant. So, आपके मन में जो डाउट्स थे कि आप सीए कब बनेंगे,
तो वो सारे मेरे दोस्त जिन्होंने 2018 में 12th की एग्जाम पास की है, when they will be qualified as chartered accountants in January 2023. All my friends who have passed 10th in 2018, who are going to give 11th in 2019 and 12th in 2020, those students will qualify as chartered accountants in January 2025. अब ये सब के पास बना है एक छोटा सा स्टार मार्क, और क्या कहता है वो स्टार मार्क? वो स्टार मार्क एक ही चीज कहता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड. मीन्स व्हाट सर? व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस? ऑलरेडी सो मेनी कंडीशंस इंपोज. ना, डरने की जरूरत नहीं है. एक छोटा सा टर्म और कंडीशन है, आप 2023 में सीए जरूर बनेंगे, प्रोवाइडेड आप फाउंडेशन एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होते हैं, इंटरमीडिएट एग्जाम बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होते हैं, और सीए फाइनल बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होते हैं. और ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल नहीं है. तो ये है आपका वॉक थ्रू अबाउट दिस कोर्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्पेसिफिकली अबाउट द फाउंडेशन कोर्स जो हम अब शुरू करने जा रहे हैं. व्हाट दिस कोर्स इज ऑल अबाउट. माय डियर फ्रेंड्स, दिस कोर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ICI on 1st July 2017 from the hands of our Prime Minister Honorable Shri Narendra Modi ji at New Delhi. इससे पहले जो कोर्स था उसका नाम था CPT कोर्स, Common Proficiency Test Course, which was introduced in 2006. So from 2006 till 2017 CPT कोर्स चल रहा था, लेकिन अब 1717 से नया कोर्स इफेक्टिव है, दैट इज CA फाउंडेशन कोर्स. Now what this course is about, as you can see over here, this course comprises of 4 papers. Paper number 1, Principles and Practice of Accounting, which is a 100 mark subjective or descriptive paper. So gone are the days of CPT. Now you have to solve each and every question. You have to draw the formats. You have to calculate. You have to write. You have to derive the answer. It's a 100 mark descriptive paper. Paper number 2 is having 2 sections. Section A is business law. Section B is business correspondence and reporting, which is another 100 mark सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर. इसमें भी आपको आंसर्स लिखने हैं. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहां पे एक आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं. सिंस आई एम अ CS ऑल्सो, आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लॉ एंड एबिलिटी टू इंटरप्रीट एंड अप्लाई दैट लॉ इन अ रिस्पेक्टिव केस. लॉ सेम होता है. लॉ के बारे में सभी लोग ये चीज कहते हैं कि लॉ इज समथिंग विच इज वेरी स्टैटिक, एग्रीड. पर जो केसेस आपके सामने आते हैं, जो क्लाइंट्स आपके सामने आते हैं, वो कभी सेम नहीं होते हैं. वो कॉम्प्लेक्सिटीज अलग होती है. हर केस एक दूसरे से बहुत अलग होता है. अब ये आपकी एबिलिटी पे पूरी तरह डिपेंड करता है कि आपके पास जो नॉलेज है आप उसको कैसे अप्लाई कर पाते हो. और एप्लीकेशन के बाद थर्ड पार्ट आता है प्रेजेंटेशन, एंड दैट इज वेयर आई पर्सनली फील कि इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा किया है कि लॉ के पेपर को सब्जेक्टिव बनाया. बिकॉज फाउंडेशन में तो आप बहुत कुछ ही लॉस पढ़ेंगे, बट गोइंग फॉरवर्ड इन इंटरमीडिएट एंड फाइनल आपको बहुत सारे लॉस पढ़ने हैं. तो वो सिचुएशन में आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि अभी से ही आपको ये हैबिट लगे कि आप लॉ को इंटरप्रीट कर सकें. यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन इंटरप्रीट, you can apply, and you can present the law. So these 2 papers are subjective paper. Paper number 3 over here is business mathematics and logical reasoning and statistics. Now this is a MCQ based paper, that is an objective paper. 100 mark objective paper. In this paper a new subject logical reasoning is added. Paper number 4 is another objective paper of 100 marks as business economics and business and commercial knowledge.
Now, in this segment, what Institute has done, Institute has removed, as compared to CPT, Institute has removed major portion of macroeconomics from here, and they have shifted this macroeconomics to intermediate. और उसकी जगह यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ उन्होंने एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। जो हमारे सीपीटी के व्यूअर्स हैं, दोस्त हैं, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस और कमर्शियल नॉलेज आपके बीएसटी बिजनेस स्टडीज की तरह ही सब्जेक्ट है। जो हमारे स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, दिस सब्जेक्ट इज सिमिलर टू योर सब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये इस तरीके से इंस्टीट्यूट ने इस एग्जाम को हाइब्रिड एग्जाम बना दिया। इट्स अ कॉम्बिनेशन एग्जाम वेयर first two papers are descriptive, another two papers are objective. Now you can see the marking scheme over here. In order to pass this exam of 400 mark, a student needs to score minimum 40% in every subject. And the aggregate score should be minimum how much? 50%. इसका मतलब क्या है? 400 मार्क्स की एग्जाम में पास होने के लिए आपको कम से कम 200 मार्क्स लाना है, और उसके साथ आपको यह इंश्योर करना है कि हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40 मार्क्स मिलने चाहिए। आपका उतना स्कोर आना ही चाहिए, यह चीज आपको इंश्योर करना है। ये जो लास्ट के कुछ पॉइंट्स है, दीज पॉइंट्स आर एप्लीकेबल ओनली फॉर पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 3 and paper number 4, which is an objective or an MCQ based paper, it has the concept of negative marking, wherein for every correct answer attempted you get +1 mark. But अगर कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और वो गलत हुआ तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे एट द रेट ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं, आई गेट लॉट ऑफ मैसेजेस, मेल्स ऑन यूट्यूब, ऑन ईमेल, व्हाट्सएप, दैट सर व्हाट डू यू सजेस्ट बिटवीन सीपीटी एंड फाउंडेशन, एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव चॉइस। आई पर्सनली फील फाउंडेशन इज बेटर। इसके कई रीजंस हैं। वन ऑफ द रीजन इज I personally is of an opinion that at least these two papers should be descriptive, because I have seen while teaching CPT students, I have seen that they developed a shortcut strategy. Okay, sir आप बताओ फास्ट आंसर कैसे आएगा। रियली वो गलत नहीं है, उस लेवल पे वही एक्सपेक्टेड है, बिकॉज वहां पे आपको 1 मिनट में एक एमसीक्यू करना होता था। यहां आपको ऐसा नहीं है, यहां आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो आपके लिए शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा काम के नहीं है। और मैंने देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस छूट जाती थी, और फिर वो बच्चे जब इंटर में आते थे तो उन्हें बहुत स्ट्रगल करना होता था लिखने के लिए। Common observations are like we've seen students are using SMS language in writing their papers. So instead of writing Y-O-U-R, they are just writing U-R. Those type of things. W-H-Y is replaced with simply Y. That's all. So my dear friends, that is where this examination is one of the